Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So now we are going to discuss exclusive NOR gate and its properties. So let us start. Now exclusive NOR gate is represented by this symbol. Let us see the truth table of NOR gate. So this is the truth table. Now we know that XOR gate output is written like this. A XOR B. This is for XOR gate. So for XNOR gate, it will be bar of this. So that means A XOR B whole bar. This will be the output of XNOR gate. And we represent it like this. This is A XNOR B. So here in this symbol, the two inputs are A and B. There can be more inputs, but there is one output and Y is equal to A or B. Now the Boolean expression, as we can see in the truth table, अब truth table में देखिए Boolean expression लिखा गया है AB plus A bar B bar. तो अब इसे हम वेरीफाई भी कर लेते हैं. Let A is equal to 0 and B is equal to 1. So Y is equal to AB. So AB is 0 dot 0 plus A bar B bar. So if A is 0, A bar will be 1 and B bar will also be 1 because B is 0. So this is equal to 1. So we can see in the truth table that if both the inputs are 0, the output is 1. Similarly, we can also verify for one more input. Let it be A is equal to 1 and B is equal to 0. Now here you see that Y will be A dot B. So A dot B means 1 dot 0 plus A bar. A bar means 0 because A is 1 and B bar will be 1 because B is 0. So the output is 0. So you can see in the truth table. Now we will design XNOR gate using basic gates. So let us consider one AND gate. Now here the two inputs are A and B. So the output will be A dot B. Consider another AND gate. Now we will give the inputs to this AND gate using two inverters. So this will be A. Now here the input will be A. So the output will be for this NOT gate will be A bar and we will give this as input to AND gate. For the second NOT gate, the input is B, output will be B bar and this is given as input to the AND gate. So here the output will be A bar dot B bar. Now we have to add these two, so we will be using OR gate. So let us give this to and gate outputs to OR gate. So here what we have Y is equal to A dot B plus A bar dot B bar. So this is how we can design a XNOR gate using basic gates. Next we come to 3 input XNOR gate. Now this is the symbol for 3 input XNOR gate. So the inputs are A, B, C and the output will be A XNOR B XNOR C. Now let us see the truth table. Now in this case what you will see is that here if the input is even, because this is even 1 detector. So if the input is even 1, then the output is high. So in case of all the inputs being 0, we are considering this case, the output should be 1. Second case if we consider, because there is just one, so that means odd number of ones, so output is 0. In the next case also the output will be 0. Here the output will be 1. Then again here there are odd number of ones, so the output is 0. Here 1. Here also 1. And here in the last there are odd number of ones, so the output is 0. This is how we get the truth table. Now let us design this 3 input XNOR gate using 2 input XNOR gate. So we will be considering 3
two input XNOR gates. Now in the first gate, let the input be A, B. This is given as input to the next gate, that is the second gate. The input is like this. And the second input to this gate is C. Now the next input to gate 3 is the output of gate 2, and another input is 0. So the output that we will get here is Y, which is equal to A XNOR B XNOR C. Now let us verify this. Okay, let us consider that A is 0 and B is 0. So if A is 0, B is 0, two inputs are same. There are even number of ones. So the output is 1. Now this 1 comes here to gate 2 and C is also 0. So two inputs are different, that is there are odd number of ones. So the output is going to be 0 here. Now there are two zeros, so the output should be 1 here. So you can see from the truth table, see here the output is 1. Let us consider another case. So in the second case, A is equal to 0, B is equal to 1 and C is equal to 0. So let me give these as input. A is 0, B is 1. Now since two inputs are different, so the output will be 0. Now this 0 is given as input to second gate and C is 0. So if the two inputs are same, the output will be 1. Now here again, if gate number 3, one input is 1 and one input is 0, so the inputs are different, so the output is going to be 0. So what we get here, that we have considered this case A0, B1, C0, this one. So we have verified that the output is 0 for this case. Let us take one more example. So let us consider even number of ones. So even number of ones are present here. Let me take this. Now here A is 1, B is 1 and C is 0. So let us see what output we are going to get. Now here A is 1, B is 1. So the output will be 1 because the two inputs are same. In the second gate, one input is 1 and the second input C is 0. Now the two inputs are different, therefore the output will be 0. And in third gate, one input is 0, another input is 0. Two inputs are same, so output is going to be 1. So here what we get, A dot, this is XNOR B, XNOR C is equal to 1. So our answer has matched, we considered this. So this way we can verify the entire table, and we have designed a circuit of 3 input XNOR gate using 2 input XNOR gates. So now let us discuss 4 input XNOR gate. 4 input XNOR gate का सिंबल ये है. इसकी इनपुट्स होंगी A, B, C, D और आउटपुट क्या होगी, Y is equal to A XNOR B XNOR C XNOR D. अब इसको हम डिजाइन करेंगे यूजिंग 2 इनपुट XNOR गेट्स. तो इसके लिए हमें 4 गेट्स चाहिए होंगे. चारों गेट्स की हम नंबरिंग भी कर देते हैं, 1 2 3 4. इसमें गेट नंबर 1 में आपके इनपुट्स होंगी A B. गेट नंबर 2 में 1 विल बी द आउटपुट ऑफ गेट 1 और जो दूसरी इनपुट होगी वो होगी C. उसके बाद गेट नंबर 3 के अंदर गेट नंबर 2 की आउटपुट और यहाँ पर गेट नंबर 3 में दूसरी इनपुट है D. गेट नंबर 3 की आउटपुट जो है वो गेट नंबर 4 में एज इनपुट जाएगी और गेट नंबर 4 में जो एक इनपुट है वो हमेशा 1 रहेगी.
नाउ लेट अस सी हमारा सर्किट ठीक है या नहीं। तो ये जो y आउटपुट हमारी आएगी इसको हम 4 कॉम्बिनेशन से चेक करते हैं, 2 ऑड लेते हैं, 2 इवन। सपोज हमारी ABCD इनपुट्स हैं, तो हम ऐसे कॉम्बिनेशंस लेते हैं। पहला ले लेते हैं 0 0 0 0। अब यहाँ पर सारे 0 हैं, इसका मतलब इवन नंबर ऑफ वंस हैं, और 4 इनपुट एक्सनॉर गेट या एक्सनॉर गेट जो होता है वो इवन डिटेक्टर होता है, इवन 1 डिटेक्टर होता है, तो आउटपुट 1 होनी चाहिए। सो लेट अस सी हियर 2 आर 0। अगर दोनों 0 हैं, सेम है, तो एक्सनॉर गेट की आउटपुट होगी 1। गेट नंबर 2 में एक इनपुट 1 है, दूसरी इनपुट 0 है, तो आउटपुट होगी इसकी 0। गेट नंबर 3 में एक इनपुट 0 है, दूसरी इनपुट भी 0 है, तो आउटपुट होगी इसकी 1। गेट नंबर 4 के अंदर दोनों इनपुट्स 1 1 है, सो द टू इनपुट्स आर सेम, देयरफॉर आउटपुट क्या होगी इसकी 1। तो हमारा एक कॉम्बिनेशन वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम लेते हैं ऑड नंबर ऑफ वंस का। अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो आउटपुट होना चाहिए 0। इसको भी चेक करते हैं हमारा सर्किट वेरीफाई करता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया A इज 0, B इज 0, दोनों सेम है, तो आउटपुट है 1। गेट नंबर 2 में एक इनपुट 1 है, दूसरी इनपुट 0 है, तो आउटपुट शुड बी 0। गेट नंबर 3 में एक इनपुट 0 है, दूसरी इनपुट 1 है, दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं, तो आउटपुट क्या होगी 0। अब गेट नंबर 4 के अंदर एक इनपुट 0 एक 1 है, तो दोनों डिफरेंट हैं, आउटपुट शुड बी 0। तो हमारा ये भी कॉम्बिनेशन वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम लेते हैं ऑफ अगेन ऑड नंबर्स 1 0 1 1। इसको अगर हम वेरीफाई करते हैं तो लेट अस सी वेदर वी गेट अ 0 और नॉट। अब इसमें A इज 1, B इज 0, देयरफॉर जो हमारी आउटपुट आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि दोनों डिफरेंट इनपुट्स हैं। सेकेंड गेट में एक इनपुट 0 है और दूसरी इनपुट है 1, C इज 1, तो बिकॉज दोनों इनपुट डिफरेंट हैं तो आउटपुट हमारी 0 होगी। थर्ड गेट में एक इनपुट 0 है और दूसरी इनपुट है 1, अगेन दोनों डिफरेंट इनपुट्स हैं, सो आउटपुट शुड बी 0। और फोर्थ गेट में भी एक इनपुट 0 है और दूसरी इनपुट है 1, वो तो हमेशा 1 ही है एक इनपुट, तो इसकी अगेन द आउटपुट शुड बी 0 बिकॉज टू इनपुट्स डिफरेंट हैं, तो हमारी यहाँ पर आउटपुट जो होगी वो 0 होगी। तो ये भी वेरीफाई हो गया, ऑड नंबर ऑफ वंस है तो आउटपुट 0 है। नेक्स्ट हम एक और इवन कॉम्बिनेशन लेते हैं 1 1 1 1। अब इसको भी हम वेरीफाई करते हैं। सो लेट अस सी व्हाट आंसर वी गेट। अगर हमारी एक इनपुट A 1 है, B 1 है, दोनों हाई है, दोनों सेम है, तो आउटपुट इज 1। सेकेंड गेट में एक इनपुट 1 है, दूसरी भी 1 है, अगेन हाई है, तो आउटपुट इज 1। थर्ड गेट में एक इनपुट 1 है और दूसरी भी 1 है, तो अगेन द आउटपुट इज 1। एंड इन फोर्थ गेट ऑल्सो दोनों इनपुट्स 1 है, तो आउटपुट इज हाई, तो यहाँ हाई है, तो हमारा वेरीफाई हो गया। इसके बेस पे हम पूरी ट्रुथ टेबल डिजाइन कर सकते हैं कि जहां इवन नंबर ऑफ वंस होंगे तो हमारी आउटपुट हाई होगी, और जहां ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे हमारी आउटपुट 0 होगी। नेक्स्ट वी कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ XNOR गेट। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ XNOR गेट इज A XNOR A। A XNOR A। अब ये किसके बराबर होगा, लेट अस कैलकुलेट। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपना बूलियन एक्सप्रेशन ट्राई कर सकते हैं जो हमारा नॉर गेट का होता है, दैट इज AB प्लस A बार B बार। अब यहाँ पर जो B है उसकी जगह भी A ही है, तो हम लिख सकते हैं A प्लस A बार A बार। नाउ वी नो दैट दिस इज इक्वल टू A डॉट A इज A प्लस A बार, और ये किसके बराबर होता है 1, ये हमने बूलियन लॉज में पढ़ा हुआ है। So that means A XNOR A is equal to 1. Next हमारी second जो property है that is A XNOR A bar. अब हम इसको भी derive करते हैं, ये क्या आएगी। तो हम सेम बूलियन एक्सप्रेशन यूज करते हैं XNOR गेट का, AB प्लस A बार B बार। अब यहाँ पर B की जगह A बार आएगा, सो A डॉट A बार प्लस A बार डॉट B जो है वो A बार है, तो ये हो जाएगा A डबल बार। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ दिस इज ऑल्सो 0 और ये भी 0 है, तो हमारा आंसर हो गया 0। सो दिस इज इक्वल टू 0।
अब थर्ड आइडेंटिटी पे हम आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है दैट इज ए एक्स नॉर 0। ए एक्स नॉर 0 है, अगेन वी विल यूज एक्स नॉर बूलियन एक्सप्रेशन। यहाँ पर बी 0 है तो हम कैसे लिखेंगे, ए डॉट 0 प्लस ए बार डॉट, अब बी की जगह 0 है तो 0 का बार क्या होगा, 1। सो वी हैव ए डॉट 0 प्लस ए बार डॉट 1। सो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये हो जाएगी ए बार। तो हमारा आंसर है कि ए एक्स नॉट 0 इज ए बार। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज ए एक्स नॉर 1। अब इसको भी हम डिराइव करते हैं अगेन बाय द सेम लॉजिक। बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्स नॉर गेट इज दिस। अब यहां पर b की जगह हो जाएगा 1। सो a डॉट 1 प्लस a बार डॉट 1 बार। सो दिस विल बी इक्वल टू a प्लस 0। सो दिस इज इक्वल टू a। तो यहां पर आ गया a। अब एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। सपोज करिए आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है a एक्स नॉर a एंड सो ऑन n टाइम्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये है कि n इज ऑड और एक है n इज इवन। अब हम सिंपल एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं कि अगर n ऑड है तो लेट n बी इक्वल टू 3। तो हमारे पास आया a एक्स नॉर a। अब हमने ऊपर डिराइव किया हुआ है a एक्स नॉर a इज 1। अब हमारे पास हो गया 1 एक्स नॉर a। 1 x nor a is a. So 1 x nor a is equal to a. So what we can write is that if n is odd, then this is equal to a. और दूसरा हमारा क्या होगा, if n is even। तो हम छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, सिंपल n is equal to 4 ले लेते हैं। 4 ले लेते हैं तो हमारे पास होगा a x nor a x nor a x nor a। अब इधर अगेन a x nor a हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज 1। इसके साथ हम एक और x nor करेंगे, ये वाला। तो अब 1 x nor a इज a। अगेन इसके साथ x nor हुआ a। स्टेप बाय स्टेप हम करते जा रहे हैं। तो a x nor a अगेन वी हैव डिराइव्ड दिस इज इक्वल टू 1। सो इफ n इज इवन, अगर n इवन है then this expression is equal to 1. So these are the properties of XNOR gate. So this is all for now. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.